आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बहुत ही आसान है। उसमें हमने जस्ट ये फाइंड आउट करना है कि जो है मैट्रिसेस गिवन हैं और वो एडिशन के लिए कंफर्टेबल हैं या नहीं। सो वो आप लोग खुद कर सकते हैं बहुत आसानी से। और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स हमारे पास वो एलिमेंट या वो नंबर होता है जो हम किसी भी नंबर के अंदर ऐड करें तो हमारे पास आंसर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी आती है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी इज अ नंबर विच वी ऐड टू एनी नंबर एंड इट डजेंट इफेक्ट दैट नंबर। कि अगर हम किसी नंबर के अंदर वो वाला एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो ऐड करें तो हमारे पास जो नंबर है उस पर कोई इफेक्ट ना हो, वो वैसे का वैसे रहे। For example, if we add 2 plus 0, it remains answer 2. So this is what? This is additive identity. So in matrices, we have additive identity 0 matrix. Additive inverse of this question is what? -2, 2, -4, -1. If we add this matrix to this given matrix, we got answer what we got? 0 matrix. So this is the additive inverse. So the next part is given is B matrix. अगला जो पार्ट है वो हमारे पास B मैट्रिक्स है और वो हमारे पास कुछ इस तरह से है 1 2 3 0 -1 -2 -1 3 and 1. So its additive inverse is what? इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा? -1 -2 -3 0 इज न्यूट्रल 1 2 1 -3 -1. So in this way we can find additive inverse of matrix. Third question, we have a matrix A having entries -1 2 2 and 1. We have to find A plus this matrix. So we have to write A -1 2 2 1 and plus 1 1 1 1. In addition of matrices, we have to add the corresponding entries. What are corresponding entries? This one and this one are corresponding entries, respectively all others. So add these entries 2 plus 1 2 plus 1 1 plus 1 -1 plus 1 0 2 plus 1 3 2 plus 1 3 and 1 plus 1 2. In this way we can solve this type of questions. The next question is, if B is equal to this matrix 1 -1 and we have to find B plus this matrix having entries -2 and 3. So we can find like 1 -1 which is B plus -2 3. We have to add corresponding entries 1 -2 -1 plus 3. We got the answer -1 2. क्वेश्चन 4 में हमने क्या करना है?
क्वेश्चन 4 में उन्होंने बोला है परफॉर्म इंडिकेटेड फंक्शन एंड सिंप्लीफाई। हमने इंडिकेटेड फंक्शन परफॉर्म करना है और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना है। तो हमने यहाँ पे क्या परफॉर्म करना है, पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं उनमें क्या हो रहा है, हमने उनको ऐड करना है। तो कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देंगे, 1 + 0 एंड 0 + 2, 0 + 3, 1 + 0, 1 0 0 1. We got 1 3 2 1. 1 0 0 1. Next again we have to add these two matrices, 1 + 1, 2 + 0, 3 + 0 and 1 + 1. What we got? 2 3 2 and 2. So this is our answer. Question number 5 is we have to verify the rules, like this is commutative law. We have to show that A + C is equal to C + A for these two matrices. For this, first we take left hand side, A + C. We have to write A matrix plus we have to write C matrix -1 we have to add corresponding entries, 1 - 1, 2 + 0, 3 + 0, 2 + 0, 3 - 2, 1 + 3, 1 + 1, -1 + 1, 0 + 2. We got 0 2 3 2 1 4 2 0 2. Now we have to do right hand side. हमने लेफ्ट हैंड साइड को फ्रीज कर दिया है, अब हमने इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। सो राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, C + A, -1 0 1 प्लस किस में करना है हमने 1 2 1 2 3 -1 3 1 0. We have to add corresponding entries, -1 + 1, 0 + 2, 0 + 3, 0 + 2, -2 + 3, 3 + 1, 1 + 1, 1 - 1 and 2 + 0. What we got? 0 2 2 2 1 0 3 4 2. We can see right hand side is equal to left hand side. So we have proved that A + C is equal to C + A. Question 6 is what? इसमें हमने फाइंड करना है, हमें A और B मैट्रिसेस गिवन है और हमने फाइंड करना है 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज. For this we have to find first A ट्रांसपोज.
A transpose is what? We have to change the rows of A into columns of A. First row is 1 and minus 2. So we have to convert it into column. And second row is 3 and 4. So this is transpose. Next we have to find B transpose, which is equal to 0, 7, minus 3 and 8. Next step, we have to find 2A transpose. We have to multiply 2 with all the entries of A transpose. So here we get 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4, which is negative 4, 2 4s are 8. Now we have to find 3B transpose. We have to multiply 3 with all the entries of B transpose. So here we get 0, minus 9, 21 and 24. Now we have to do 2A transpose minus 3B transpose. 2A transpose minus 3B transpose. 2A transpose is 2 minus 4, 6, 8. Minus 0, 21, minus 9, 24. We have to subtract corresponding entries. 2 minus 0, 6 माइनस इंटू माइनस 9 प्लस हो जाएगा -4 -21 8 -24. So we got the answer 2 6 plus 9 15 -25 and -16. So this is our answer. In question 7 we have to find values of AB. First we have to multiply this 2 with all the entries of this matrix. If we multiply 2 with 2, we get 4. 2 4s are 8 -6 2a. Plus we have to multiply 3 with all the entries. 3 3b 24 -12 is equal to 7, 18, 10 and 1. So we got next we have to add these two matrices. We have to add corresponding entries. 4 plus 3, 8 plus 3b, -6 plus 24, 2a minus 12 equals to -7, 18, 10 and 1. 7 18 8 plus 3b 2a minus 12 is equal to 7, 18, 10 and 1. Now all the corresponding entries are equal because these two matrices are equal. So equate the values. 3b is equal to corresponding entry 10 and 2a minus 12
is equal to corresponding entry 1. 3b is equal to 10 minus 8 and b is equal to 2 by 3. Here 2a is equal to 1 plus 12 and a is equal to 13 by 2. So we got the values of a and b. In question number 8, one matrix is given, A matrix, and we have to verify A plus A transpose is symmetric. So first we have to find A transpose. A transpose is what? We have to convert the rows of A into columns of A. So here we got A transpose. Now we have to find A plus A transpose. For this, A 1 0 2 1 plus A transpose is what? 1 2 0 1. Add the corresponding entries. 1 plus 1, 2 plus 0, 0 plus 2 and 1 plus 1. We got 2, 2, 2 and 2. Now we have to check either this matrix is symmetric or not. For symmetric, we have to find if the matrix is equal to its own transpose, then the matrix is called symmetric matrix. We can see all the entries are same. If we take the transpose of this matrix, we got the same matrix. So this matrix is symmetric matrix. Its transpose is equal to this one. If we take the transpose of this one, we again got this matrix. So in this matrix, M is equal to M transpose. So this matrix is symmetric matrix.